Hey guys, welcome back to another video. So this is episode number 17 of Python series. For those who are new, that we have launched our Python series for beginners from very basic on YouTube for free of cost, in which we will go from very beginning and cover many projects based on Python also in the coming videos. In this video, we are going to cover about tuples, how they are different from the list. लास्ट वीडियो में हम लिस्ट पढ़ा, लिस्ट के मेथड्स पढ़े, कैसे वो डिफरेंट है, कैसे हम टपल्स को यूज कर सकते हैं एंड in what cases we use tuples. This is all we are going to learn in this video. Stay tuned and here is the intro. Hi, I am Pragati Sahu. So we are on a computer screen and now we are going to start about tuples. So tuple is nothing. It's just another data type used in Python. जैसे हमने लिस्ट यूज किया था, इंटीजर यूज किया था एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मेंबर्स हमने पढ़े हाउ टू क्रिएट वेरिएबल्स. सिमिलरली वी कैन क्रिएट अ टपल. टपल को क्रिएट करने के लिए आपको दो तीन मल्टीपल आइटम्स चाहिए होते हैं जिनको आप स्टोर कर सकते हो इन सिंगल वेरिएबल. दैट्स इट. इट जस्ट लाइक अ लिस्ट. बस वो डिफरेंस क्या होता है, अगर हमारे पास लिस्ट अवेलेबल है जहां पर हम अपने मल्टीपल आइटम स्टोर कर पा रहे हैं, सो व्हाई डू वी नीड टपल्स? वी नीड टपल बिकॉज दे आर अनचेंजेबल एंड दैट्स अ मेजर डिफरेंस. A major difference between list and tuple is that list tuples are unchangeable. You cannot change the value inside the tuple. Okay. So tuple create करने के सबसे पहला पॉइंट, आपको यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स यूज करने हैं, ना कि स्क्वायर ब्रैकेट्स. तो हम एक टपल क्रिएट करते हैं. लेट्स सपोज मैंने टपल क्रिएट किया. टपल इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट्स. माय फॉर एग्जांपल प्रगति, my name Deepa, Shruti. I have to store multiple names of members and any another example, Arjun. So here is a tuple. Now I want to print it. So it's just same as our list, but difference is that we are using the round brackets here to create a tuple. एक और tuple create कर लेते हैं, tuple 2 for storing the programming language name. Let's suppose Java, Python, C++, or Go. Go is also a language, somewhat like this. I have created a second tuple. So this is how we can create a tuple. Very easy. The elements of a tuple can be accessed by indexing. जैसे हमने list में indexing किया. For example, I have to access the any member inside tuple 2. Let's suppose this second member with the index 1. So I can directly access it by using indexing. तो simple है. लिस्ट की तरह. बस यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, दैट दे आर अनचेंजेबल. यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू. इफ आई वांट कि यहाँ पर दीपक के बदले कोई और नाम आ जाए, लेट्स सपोज आई वांट टू चेंज द नेम फ्रॉम दीपक टू एनी अदर नेम, सो कैन आई चेंज इट? लेट्स स्टार्ट दैट आई वांट टू चेंज द सेकंड मेंबर ऑफ टपल. सेकंड मेंबर दैट इज द इंडेक्स 1. इंडेक्स 1 को मुझे चेंज करना है, दीपक के बदले करना है रवि. So now the error is that Ravi is not defined first of all, and tuple 1 you cannot change. Okay. It's a string, so I have to enclose it in double quotes. I'm saying that change the value to Ravi. Now it's a tuple object does not support item assignment. So you cannot change the value, and that's the major difference between list and tuples. That अगर आपके कोई पूछे कि भाई लिस्ट टपल, अभी हमको सेट भी पढ़ना, हम डिक्शनरी पढ़ना है, लेकिन अगर लिस्ट एंड टपल ये दोनों बिल्कुल सेम लगते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये काफी इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल. दैट दे आर अनचेंजेबल. टपल में आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, आप वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते. अगर आपको वैल्यू रीअसाइन करनी है, आप चाहते हो कि यहाँ पर वैल्यू चेंज हो, तो आपको एक नया टपल बनाना पड़ेगा. लेट्स सपोज मैंने बनाया टपल 3 एंड यहाँ पर मुझे पूरी वैल्यूज को एज इट इज लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था. यहाँ पर जो भी मुझे वैल्यू चेंज करनी है, लेट्स सपोज मुझे यहाँ पर रवि डालना था, मैं रवि लाइक दिस डालूंगी. नाउ इट विल बी चेंज. तो हमको अगर वैल्यू चेंज करनी है तो हमको सिंपली अपना नेम, अपनी वैल्यू को रीअसाइन करने के लिए नया टपल बनाना पड़ेगा. आप टपल का साइज भी चेंज नहीं कर सकते हो. एक बार टपल असाइन हो गया, इट मींस इट असाइन. यू कैन नॉट चेंज. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये तो इसका एक डिसएडवांटेज है.
है ना। टपल को अगर हम चेंज नहीं कर सकते तो क्या फायदा है टपल को यूज करने का। अगर लिस्ट में तो हम चेंज कर सकते थे। अगर मैं एक लिस्ट बनाऊं यहाँ पर विथ स्क्वायर ब्रैकेट्स, अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखूं, सिमिलरली मैं सेम वैल्यूज से लिस्ट बनाऊं लाइक दिस, और यहाँ पर बनाऊं स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो हमारी लिस्ट बन गई। ओके 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 ओके, लेट मी just copy this. It's just a typing error from my side. The list bun gayi and I have printed the list. If I want to change the value of list, any member in the list, like the list of one is equal to again deeper inside my double quotes. So the value is changed now. Now I will print the value of list and now the value is changed. तो लिस्ट में हम बहुत इजीली कर सकते थे, लेकिन टपल्स में नहीं है। क्यों? क्योंकि टपल्स आर अनचेंजेबल। एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बीइंग अनचेंजेबल हियर, कि अगर आपको कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना है, आगे चल के हम इन सब चीजें यूज करने वाले हैं, इसके मेथड यूज करने वाले हैं, सो यू हैव टू नो। ठीक है, हमको ऐसा कोई एग्जाम्पल, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, ऐसा कोई प्रोग्राम है जिसमें हम चाहते हैं कि हमारा एक बार अगर वेरिएबल असाइन होगा, दैट कैन नॉट बी चेंज, इट शुड बी कांस्टेंट। तो इन दैट केस वी विल यूज टपल्स। तो टपल्स की बाकी सारी प्रॉपर्टीज लिस्ट की बराबर जैसे ही, जैसे कि हम टपल्स में डुप्लीकेट्स डाल सकते हैं। इट मींस दैट टपल कैन हैव टू वैल्यू, सेम टू वैल्यूज इन वन सेम टपल। यहाँ पर मैंने एप्पल को 2 बार लिखा है, चेरी को 2 बार यूज किया है। So you can create like this also. Determine how many items we have in a tuple. So we can use like length function. Length function को use करते हैं हम like this, tuple 2 and the length is 4. तो लेंथ फंक्शन से पता कर सकते हैं कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है। यू कैन एक्सेस द टपल बाय रेफरिंग द इंडेक्स नंबर। ये हमको पता है कैसे हमें करना है, इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स ओनली, जस्ट लाइक वी डिड इन एरे एंड द लिस्ट। नेगेटिव इंडेक्सिंग यहाँ भी अवेलेबल है, आप अगर चाहो नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई हैव यूज्ड हियर टपल -2, तो here it is giving me it -2 पर श्रुति, -2 मतलब सेकेंड लास्ट। तो यहाँ पे मैं टपल की वैल्यू क्या, प्रगति, दीपक, श्रुति, अर्जुन, दिस इज द टपल एंड -2 अगर मैं करूँ तो सेकेंड लास्ट इज दिस। फॉर एग्जाम्पल if I want to change the give the range of indexes, तो range of indexes भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं like this, कि अगर मुझे टपल में range of index देना है तो मैं चाहती हूँ कि 2 से लेके 5 तक जितनी वैल्यूज है वो प्रिंट हो जाए। ये हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है, आप चाहो तो एक वैल्यू दे सकते हो, जैसे हमने लिस्ट में पढ़ा था कि हमने एक वैल्यू दी है और एक वैल्यू नहीं दी है। लेट्स से फर्स्ट वैल्यू नहीं दी है, लास्ट वैल्यू दी है, तो फर्स्ट वैल्यू इट विल टेक 0, इट मीन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टपल। अगर मैं लास्ट वैल्यू नहीं दी है, अगर मैंने लास्ट वैल्यू नहीं दी है रेंज ऑफ इंडेक्स में, फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया यहाँ पर 2 से लेके एंड टिल द लास्ट विद द लेंथ ऑफ द टपल, print all the elements. So we can also access the elements inside the tuple like this also. So this is all about tuples. Next is we can also use the in keyword. In keyword को use करके हम पता लगा सकते हैं that whether that element is present or not. For example, this is my code and I want to know कि मेरे पास tuple में apple present है। Okay, I want to know that. So by this we can use this, and here is the indentation error. Oh, it's fine. Okay, इसको रन करते हैं। तो बाय यूजिंग इन कीवर्ड मैंने यहाँ पर नाम दिया एलिमेंट का जो मुझे सर्च करना था, एंड हियर द टपल नेम, दिस टपल वाज माय टपल एंड हियर यस एप्पल इज प्रेजेंट द फ्रूट्स टेबल। तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हो, सर्चिंग कर सकते हो टपल्स के अंदर। तो सर्चिंग हमने सीखा, हमने इंडेक्सिंग सीखा, कैसे हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं, कैसे हम एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड व्हाट द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। डू रिमेंबर दिस बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन अपकमिंग वीडियोस एंड वी विल कवर this topic in our projects also. So that's it in this video. Thank you everyone. Bye bye.